नमस्कार, वेलकम टू श्रीका एकेडमी। आज आम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स चैप्टर टी को पढ़ा जोटा हूँ क्लास 7 रो साइंस एनसीईआरटी बुक रो सेकेंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। सो एटी आम जानिले जे प्लांट माने बंचापी से जमी न्यूट्रिशन दरकार पड़े एंड से न्यूट्रिशनटा प्लांट्स माने निजे निजे तैयारी करि पारंती, बट एनिमल्स मानकर निजे निजे फूड तैयारी करिवार कैपेसिटी न थाए। तो से माने डिपेंड करते आइदर प्लांट उपर या फिर अन्य एनिमल उपरे निजर लाइफ को सस्टेन करने बंचापी। तो यही चैप्टर रे आम पढ़ा फर्स्ट चैप्टर रे आम पढ़ी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, सेकेंड चैप्टर रे आम पढ़ा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एटा होचे क्लास 7 रो साइंस रो चैप्टर 2 CBSE एनसीईआरटी बुक रो चैप्टर 2। सो देखिबा सो आम देखिले कि चैप्टर 1 रे तो प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बट द एनिमल्स कैन नॉट। तो प्लांट माने निजर फूड को निजे तैयारी करि पारंते, बट एनिमल्स निजर फूड को निजे तैयारी करि पारंती नाही। सो एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम द प्लांट्स either directly or by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants। तो से लिखला कि एनिमल्स मानकर फूड पाइबार दुईटा तरीका थाए। डायरेक्टली से माने गछरु खाइकी प्लांट्स मान खाइकी से न्यूट्रिशनटा पाई परिबे, या फिर इनडायरेक्टली एनिमल्स जो माने गछ को खाती से माने को खाइकी से न्यूट्रिशनटा को से माने पाई परिबे। Some animals eat both plants and animals। so किछिटा एनिमल थांती जो माने both plants भी खाते animals भी खाते, जेमिति कि मनुष्य माने plants भी खाते animals भी खाते। so recall that all the organisms including humans require food for growth, repair and functioning of the body। so सब ऑर्गेनिज्म माने इंक्लूडिंग ह्यूमन माने कौन रिक्वायर करती, फूड रिक्वायर करती से ग्रोथ पाई, बॉडी रे किसी गोटे इंजुरी हो गले तार रिपेयर पाई एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। सो एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ द फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। सो एनिमल न्यूट्रिशन ना तीन पार्ट रिप्रेजेंट कराई जोटा हूँ न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ द इनटेक ऑफ द फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। सो तीनटा रिक्वायरमेंट्स एनिमल न्यूट्रिशन एथिरे रिप्रेजेंट करछि। So food consists of many components, try to recall and list them below। एटा आपनकर काम आपन निजे रिकॉल करिके करि परिबे। नेक्स्ट क्लास रे मु कहिबे एटा कोन हबा आंसर। सो नेक्स्ट लिखिबा the components of the food such as carbohydrates are complex substances and these complex substances cannot be utilized as such। so carbohydrate टा होची गोटे complex substance सेटा डायरेक्टली बॉडी सेटा को यूटिलाइज करि पारे नै। so they are broken down into simpler substances। तो डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट को हम यूज करि पारबेनी, ताको हम सिंपलर सब्सटेंस रे कन्वर्ट कला पर ही यूज करि परिबा। the breakdown of the complex components of the carbohydrates आमर फुल वीडियो रे अपलोड करा जिवो। आमर फुल वीडियो देखिबा पय श्रीका एकेडमी यूट्यूब चैनल को